Hello students, today we concentrate on the very first question of exercise 12.1 from NCERT. आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या इसका स्टेटमेंट है. Here radii of two circle are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of circle which has circumference equals to the sum of the circumference of these two circles. सिंपल सी बात है, दो सर्किल दे रखे हैं जिनकी रेडियाई 9 सेंटीमीटर है और 19 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है, और हमें उस सर्किल का रेडियस फाइंड करना है जिसका सरकमफ्रेंस इन दोनों सर्किल्स के सरकमफ्रेंस के इक्वल दे रखा है. आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हियर. मान लेते हैं जो रिक्वायर्ड सर्किल है उसका रेडियस स्मॉल आर है. लेट रेडियस ऑफ required circle is equal to small r centimeter and r1 equals to 19 centimeter जो कि क्या है circumference of such circle. r2 equals to 9 centimeter जो कि क्या है circumference of second circle. अब according to क्वेश्चन क्या कह रहा है. Question is saying here circumference of circle whose radius is r equals to the sum of the circumference of circle whose radius is r1 plus circumference of whose circle whose radius is r2, यानी कि 2 pi r equals to 2 pi r1 plus 2 pi r2. इसको आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं circumference of circle of radii r centimeter equals to the circumference of circle of radii r 1 centimeter plus यहां से इसको वॉश कर रहे हैं प्लस circumference of circle of radii r2 centimeter. तो क्या मिलेगा 2 pi r equals to 2 pi r1 plus 2 pi r2. पुट द वैल्यू, आपको r की वैल्यू फाइंड करनी है. तो 2 pi r equals to 2 pi, the value of r1 is 19 plus 2 pi, value of r2 is 9. Then आप देख रहे हैं दोनों साइड 2 pi कॉमन लेंगे, दोनों साइड से 2 pi r equals to 2 pi, you are 19 plus 9, 2 pi cancel out and the value of r is 28 centimeter. इस तरह से हमने r की वैल्यू 28 सेंटीमीटर निकाल ली. ओके, थैंक यू. Hello students, today once again we concentrate on the second question of exercise 12.1 from NCERT of class 10th. Here the statement of the question is the radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the area of two circles. These two circles. आइए देखते हैं solution क्या है. See here the solution. So dear students, firstly let radius of required circle is to r centimeter. जो required circle है उसका हमने रेडियस r सेंटीमीटर ले लिया, and the radius of the circles which are given r1 equals to 8 centimeter and r2 equals to 6 centimeter. These are the radius of the circle which are already given. अब क्वेश्चन क्या कहता है. According to the question ATQ, question is saying here area of circle whose radius is r, area of circle whose radius r equals to area of circle
whose radius is r1 plus area of circle whose radius is r2। भाई रिक्वायर्ड सर्किल का जो एरिया है वो एरिया ऑफ सर्किल whose radius is r1 plus area of circle whose radius is r2। तो इस हिसाब से क्या मिलेगा, पाई r square which is the area of circle whose radius is r equals to पाई r1 square plus पाई r2 square। अगर हम चाहे तो पाई कॉमन ले सकते हैं डायरेक्टली, पाई कॉमन लेके r1 square plus r2 square, pi cancel out। Here we have to find the value of r, put up the value of r1 which is 8 centimeter and put up the value of r2 which is 6 centimeter। So we got here 64 plus 36, then r square is 100, r square 100 है, so simple सी बात है, r square over 10 का square, taking the square root of both side, then we got here over 10 centimeter। यहाँ plus sign plus minus नहीं लगाएंगे because we find here radius and radius is always positive, never negative। Okay, thank you students।